Hello students, as in previous class we have discussed the introduction of wave motion and also we discussed there are various types of wave, mechanical wave, electromagnetic wave and matter wave. And also electromagnetic waves are two types, mainly longitudinal wave and transverse wave. So these waves can propagate from one position to another position. That means these are progressive wave, it can progress. So in today's class we will derive the equation of a progressive wave. Okay, that means when a progressive wave is progressed from one position to another position, then what will be the equation? As we have seen that in transverse wave, when the wave is propagating, then its particle in the medium starts oscillating. That means it starts to and fro motion about its mean position. So that is called simple harmonic motion. So obviously to derive this equation of a progressive wave, we have to consider first a simple harmonic equation. As we all know that y equal to a sin omega t is a simple form of a simple harmonic motion. So first of all, we derive a wave, we draw a wave where it starts from origin and after t second it reaches at b position. Okay, it reaches at b position where t is the time period. Suppose at any of its path a is a point which is at a distance x from origin, okay, and the displacement at the particle at a position is small a. Okay, so first we write the equation of a particle in the medium that execute simple harmonic motion is y equal to a sin omega t. Equation number 1, where omega is the angular velocity. Okay, where omega is the angular velocity. So if both the particle which is at A and which is at O starting at the same time, then obviously there will be a path difference. Therefore from figure it is clear that the particle which is at O position and which is at A position both have some path difference x. Okay, so obviously if there is some path difference, so obviously some phase difference also be arised. Okay, because previously we have known that in a circular path, when a particle starts from mean position and when a particle start at any other position, then दोनों में क्या एक phase difference arise हुआ था. Okay, so between a point, a particle, and between O particle, obviously there should be some phase difference. So the equation of simple harmonic motion will be changes little bit. As there is some phase lag between the particle at A and the particle at O point, so the equation becomes y equal to a sin omega t minus phi. Okay, where phi is the phase difference. So here देखो from figure path difference कितना है? The particle which is at A and which is at O, path difference is x. Okay, if we know if the path difference is equal to the wavelength, then phase difference equal to
2 pi, that is 360 degree. ठीक है. So lambda when path difference equal to lambda, then phase difference is 2 pi. Okay. So when path difference is x, then phase difference is obviously क्या होगा 2 pi by lambda into x. Okay, that is phase difference equal to 2 pi by lambda into x. So the equation become modified, that is y equal to a sin omega t minus 2 pi by lambda into x. Okay, so y equal to a sin, again we know omega equal to 2 pi by capital T, that is total angular displacement by time period, minus into t, एक small t होगा, minus 2 pi by lambda into x equal to a sin 2 pi by lambda. अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लैम्डा मल्टीपल करना पड़ेगा, that is lambda by t into small t minus x. That means y equal to a sin 2 pi by lambda, lambda by t equal to क्या, velocity v, vt minus x. Okay, so this is the simplest form of a plane progressive wave, or in general we can write that y equal to a sin omega t minus kx is the equation of a plane progressive wave. ठीक है, where k equal to 2 pi by lambda. So this is the simplest form of a plane progressive wave. Okay, so equation क्या है, y equal to a sin omega t minus kx. So here हम लोग क्या consider किए थे, the wave is propagating along positive x-axis. So there is a probability that the wave also propagating along negative x-axis. Then only a change that in equation y equal to a sin omega t plus kx, because the यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता तब माइनस एक्स होता इक्वेशन में, तब यहाँ पे से माइनस की जगह पे हम लोग को प्लस पुट करना होता. ठीक है. सो इफ द वेव इज प्रोपागेटिंग along negative x-axis, then the equation of the plane progressive wave becomes y equal to a sin omega t plus kx. Okay, so in general we can write that y equal to a sin omega t plus minus kx. ठीक है. So this is the equation of a plane progressive wave. So if two plane progressive waves are overlapping each other, then what happen? That means one progressive wave is traveling along positive x-axis, and after that there is obstacle, and from that obstacle it gets back by reflected. Okay. So what happened? So the diagram like that. यहाँ से एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपागेट हुआ, and at that point it will reflect, and then the reflected wave will propagate in this direction. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ, one is incident wave, suppose this is incident wave, and this wave is reflected wave. Reflected wave. That means when two identical progressive wave, it is also a progressive wave. देखो सिर्फ डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गया. इंसिडेंट वेव का जो डायरेक्शन था रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ए प्रोग्रेसिव वेव. सो इफ वी से दैट व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, आइडेंटिकल मीन्स
that both have equal velocity, they have equal amplitude and equal wavelength. ठीक है? So when two identical progressive wave travel through a medium along with same line, then it overlaps and formed a new type of wave. So that wave is known as stationary wave. Okay? So what is stationary wave? Stationary wave, इसका डेफिनेशन क्या होगा? If two identical progressive wave travel through a medium along with same velocity, same amplitude, but in opposite direction, is superimposed over each other and produce a new type of wave that is called stationary wave. ओके, तो यहाँ पे स्टेशनरी क्यों बोला है? देखो ये जो वेव यहाँ पे जनरेट हुआ, दिस वेव इज कॉन्फाइंड इन बिटवीन दिस टू प्लेन, वन इज दिस एंड अनदर इज द प्लेन फ्रॉम वेयर द वेव इज रिफ्लेक्टेड. ठीक है, मतलब इसके अंदर ये वेव कॉन्फाइंड रहेगा, कभी इसके बाहर ये प्रोपागेट नहीं कर सकता. और यहाँ पे जितना मीडियम में जितना सारा पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. देखो ये जो वेव फ्रंट हम लोग ड्रॉ किया, इस वेव फ्रंट अगर अच्छा से नोटिस करोगे तो देखोगे कुछ पोजीशन में क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट 0 एंड एट सम पोजीशंस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. ओके, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. सो यहाँ पे मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड और इधर 0 है, फिर इधर 0 है, फिर इधर भी 0 है. तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ पे जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज ओनली वाइब्रेटिंग अबाउट दिस मेन पोजीशन. ओके, एंड जो रेस्ट पोजीशन में जो पार्टिकल है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, वो रेस्ट पोजीशन में ही है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस वेव इज नोन एज स्टेशनरी वेव. कभी ये प्रोग्रेस नहीं करेगा, हमेशा बिटवीन टू प्लेन में के अंदर ही कॉन्फाइंड रहेगा. इफ वी टेक ए ऑर्गन पाइप, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, गिटार, सेतार, वायोलिन, ये सब के अंदर जो वेव प्रोड्यूस्ड होता है, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव. ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव? एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y इक्वल टू a sin omega t minus kx. Okay, so this is the equation of a progressive wave which is incident on that plane and gets reflected back. Okay, so the reflected wave का equation क्या मिलेगा? This is also a plane progressive wave, but it can propagate in an opposite direction. That's why the equation becomes, so if y1 equal to a sin omega t is the equation of incident wave, then y2 equal to a sin omega t plus kx is the equation of reflected wave. Okay, reflected wave. So the resultant displacement कितना होगा? y equal to y1 plus y2.
क्योंकि एक वेव दूसरा वेव के ऊपर अगर सुपर इम्पोस्ट होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहता, मान लो बोथ वेव विल बी propagated at positive x-axis. Suppose this is y1 and this is y2. Then the resultant wave हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, दोनों को एडिशन करते हैं. Then the amplitude will be large and the wave becomes like that. ठीक है. So the displacement y equal to y1 plus y2. So a sin omega t minus kx plus a sin omega t plus kx. Okay, if we take a as a common, then sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx. Okay, so a sin, अच्छा देखो, अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम लोग सी कॉन्सिडर करेंगे एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स को अगर डी कॉन्सिडर करेंगे, देन देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री साइन सी प्लस, ओके, इफ वी कंसीडर दैट ओमेगा टी इक्वल टू सी एंड के एक्स इक्वल टू डी एंड ओमेगा टी इधर सी एंड के एक्स क्या है डी, देन देखो फॉर्मूला क्या है साइन सी प्लस डी, C and D, ओके, C प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. ओके, तब यहाँ पे एक टू फैक्टर आएगा, 2a साइन सी क्या है यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, तब c प्लस डी बाई टू, मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू. ओके, इनटू कॉस सी माइनस डी ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई टू. सो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक के एक्स जो टर्म है कैंसिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे देखो ओमेगा टी जो टर्म है ये भी कैंसिल्ड हो जाएगा. दैट इज 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स. ओके, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं. दैट इज 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी. क्यों इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. So obviously जो 2a cos omega t, this is considered as a, so a sin omega t. So y equal to a sin omega t. So this is the equation of a stationary wave. Okay, so in stationary wave there is some point where the amplitude is 0 and also some point where the amplitude is maximum. ठीक है, सो ये पॉइंट का एक स्पेसिफिक कुछ नाम है. सो जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है उस पॉइंट का नाम हम लोग बोलेंगे, दिस पॉइंट आर नोन एज नोड्स एंड जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंटी नोड्स. ओके, नोड्स एंड एंटी नोड्स. सो ऑब्वियसली देयर विल बी द कंडीशन फॉर which the amplitude become 0. ठीक है, amplitude become 0 and it is called nodes, and the condition for which the amplitude is maximum, that is for antinodes point. Okay, so we have derived that what are the positions of nodes and antinodes in a progressive wave. Okay, सो यहाँ पे देखो इक्वेशन नोटिस करो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड बिकम 0, देन ऑब्वियसली दिस टर्म दैट इज a इक्वल टू क्या 2a cos kx. ओके, सो a बिकम 0 एंड फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट दैट इज फॉर लार्ज एम्पलीट्यूड y इक्वल टू मैक्सिमम. दैट मीन्स यहाँ पे जो a का वैल्यू
that is 2a cos kx will be maximum. Okay, so for minimum amplitude, for minimum amplitude, a equal to 0, that is 2a cos kx equal to 0. सो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो के एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू पाई, where n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 etc. ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन. सो ऑब्वियसली we know k equal to 2 pi by lambda into x equal to 2n plus 1 by 2 into pi. बोथ साइड देखो पाई विल बी कैंसल्ड, ठीक है. सो x इक्वल टू 2n plus 1 into lambda by 4. Okay, so these are the position for minimum amplitude. Minimum amplitude means there is position of nodes. Okay, so देखो position of nodes क्या होगा. If we put यहाँ पे n का वैल्यू कितना 0, 1, 2, 3 etc. If we put the value of n as 0, then x become lambda by 4. When we put n equal to 1, then x equal to 2 into 1 plus 1 मतलब 3 lambda by 4. If we put n equal to 2, then x equal to 5 lambda by 4, then 7 lambda by 4 and so on. That means it is the multiple of, that is odd multiple of lambda by 4. 1, 3, 5, 7, 9 etc. ठीक है. Next, for maximum amplitude, what will happen? For maximum amplitude, obviously 2a cos kx equal to plus minus 2a. क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना था, एम्पलीट्यूड था a, ठीक है. सो ऑब्वियसली a प्लस a इक्वल टू 2a. ऑब्वियसली टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा, प्लस माइनस 2a. सो cos kx इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos. सो kx इक्वल टू cos n पाई का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 1, so n pi. Okay, so k equal to 2 pi by lambda into x equal to n into pi. Both side pi cancel, so x equal to n lambda by 2, where n equal to कितना 0, 1, 2, 3 etc. So position of antinode कौन सा होगा. Position of antinode, if we put the value of 0, then x equal to 0 होगा. When we put the value of n as 1, then lambda by 2 होगा. And then if 2 lambda होगा, then 3 lambda by 2 होगा. That is, the antinodes are produced at the position which are the even multiple of lambda by 2. लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2. ठीक है. सो देखो हम लोग अगर वेव फ्रंट एक ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा क्या कितना डिस्टेंस है वन नोड से अनदर नोड तक एंड वन एंटी नोड से अनदर एंटी नोड तक. ठीक है. सो दिस इज मेन पोजिशन. सपोज द वेव स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोजिशन. ठीक है. and from here it will reflect back. Okay,
सो देखो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, दिस पॉइंट आर नोन एज नोड्स। सो इधर नोड्स है, इधर नोड्स है, इधर भी नोड्स, इधर नोड्स और इधर भी नोड्स, ठीक है। एंड एट दिस एंड यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सो यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस्ड हुआ एंटी नोड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड, एंटी नोड। सो फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट बिटवीन two node obviously there should be a antinode, or in between two antinode obviously there is a node, ठीक है। सो देखो one complete cycle means यहाँ पे जो ड्रॉ किया था हम लोग, दिस इज द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज कितना, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा। सो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे एंटी नोड था, सो वन नोड टू अनदर एंटी नोड का डिस्टेंस, सो यहाँ पे वन नोड टू अनदर एंटी नोड का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाई 2, उसका भी हाफ, दैट इज हाफ ऑफ लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स लैम्डा बाई 4, ओके। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड lambda by 2 and two consecutive antinode also lambda by 2, and distance between one node to another antinode or one antinode to another node तक distance कितना, lambda by 4। so देखो in this figure this distance is lambda by 4 and यहाँ से यहाँ तक, so this is lambda by 2, that means distance between one node to another antinode, ठीक है। and if this distance another antinode से नेक्स्ट नोड तक ये डिस्टेंस भी कितना, लैम्डा बाई 2। सो ये टोटल कंप्लीट डिस्टेंस इज नोन एज वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज डिस्टेंस लैम्डा। सो यहाँ पे देखो लैम्डा बाई 2 में क्या हुआ था, लैम्डा बाई 2 में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, दैट मीन्स मिनिमम एम्पलीट्यूड, पोजिशन ऑफ नोड्स, एंड लैम्डा बाई 2 में क्या हुआ, लैम्डा बाई 2 में डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दैट इज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो दिस इज पोजीशन ऑफ एंटीनोड, clear? So in a stationary wave, node and antinode is produced.